I request from Prakash to please hand over bouquet to Raisa. A Delhiite, somebody who's been living in Delhi and he has created a wonderful name for himself and especially for Indian film industry all over the world. And he started his career as an engineer, just for your information, because I know there are few engineers, doctors, lawyers, businessmen sitting in our campus. He started his career as an engineer and soon left it and shifted to Mumbai, where he started directing his own shows, and eventually he made his directorial debut with Who Made Magic. Starting Professor Ashok Tyagi to please speak. Respected President Sandeep Marwah ji, Director Shobha Kulsresh ji, for a Hindi film. And show चालू होने से पहले जैसे बारातियों का रिसेप्शन करने के लिए वो लड़के मार्केटिंग वालों ने किया, तो मैं भी गया फिल्म देखने के लिए और मुझे फिल्म देख के बहुत मजा आया. आई जनरली और बड़ी स्टार कास्ट ना होने के बावजूद भी उसने, क्योंकि आज की तारीख में तो फिल्म को समय मिलता है 3 दिन का अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, तो उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया. जब मैं और पूरी फैमिलीज they started coming, they started enjoying the film. And Jimmy Shergill is a very, very talented. And that passion you have to create within yourself. We can only guide you, assist you, help you, give you a better environment to grow in this beautiful institution. But develop that passion, the passion what Anand L. Rai has created within himself. 2 लाइनें याद आ गई सर आपके लिए कि राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया. This is what I feel. Well, it's a high time. Even I'm very anxious to listen to Anand L. Rai. May I request Anand ji to please guide all of us. क्योंकि मेरा ये होम टाउन है, मैं यहाँ भाग के आता हूँ जब भी मौका मिलता है. और एक चीज मैं बता दूं, मेरे को फिल्म मेकिंग से ज्यादा खाने का शौक है. और पर रिटर्न में मैं भी एक सवाल पूछूंगा जो खाने को लेकर. मैं आज सुबह ही बात कर रहा था कि I personally feel that there is a difference between a director and a filmmaker. So I'm still a student, learning. It happened to me, whether it was my first film From Strangers to Ranjana. एक ही चीज फॉलो की, whether my film achieved success or it went through a failure. Whenever you tell a story, tell from your heart. That's very important. और sincerity रखिए. मैंने बहुत सीरियस नहीं लिया फिल्म मेकिंग को लेके, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ. हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ कहानियाँ सुनाने में. I love telling stories. Another thing which I feel that has given me a little more happiness and plus is that God has blessed me, graced me that I can fall in love with people easily. So when I work with my actors, there is a different kind of connect I look forward to. It's more than when I was casting Madhavan or Kangana or Jimmy or Dhanush or Sonam. It's I can say right now that I know them, they know me. I love them, they love me. It's beyond filmmaking. So what is very exciting about our line is that you tend to fall and then at times आप उससे बाहर निकल आते हैं. तो मेरे साथ interestingly ये हो रहा है कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा. It gave so much substance, it gave so much of sense, and it gave so much of strength to the character that everybody started loving that character. Now, this is the job of the real director. And this is for the information of all those students who are keen in getting into acting, that with today's statement, no actor is a bad actor. No actor is a bad actor. It is the right character which is to be deputed or which is to be played by him at the right time under a right director. So don't get disheartened. And this is for all those actors who've been asking question के मुझे कब काम मिलेगा. सबके लिए काम है, सबके लिए फिल्म है, सबके लिए एक अच्छा डायरेक्टर कहीं ना कहीं बैठा है, लेकिन you have to suit to that character. That is a very important part of filmmaking which we generally miss in the classrooms. सबसे पहला
जो आप कहानी सुनाने जा रहे हैं क्या आपको खुद को सुनना पसंद है, वो जरूरी। दूसरी चीज, फिल्म मेकिंग, व्हेन यू टेल अ स्टोरी, उसके कोई पॉइंट्स नहीं होते। इट्स फॉर मी इट्स नॉट अ फॉर्मूला। आपका एक पर्सनल सोल कनेक्ट होता है। आपको लगता है कि कहानी की हार्ट बीट मैं पहचान रहा हूँ, ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे दिल के सही जगह पे लग रही है। और वो जो मैं सीखा हूँ और जो मैं सीख रहा हूँ, ये चीजें मुझे और समझ में आ रही है। यू शुड नॉट मेक योर सेल्फ हैप्पी और मेक योर प्रोड्यूसर हैप्पी। इट्स अबाउट द ऑडियंस, इट्स जिनके लिए आप कहानी बना रहे हैं। जब मैं स्ट्रेंजर्स बना रहा था, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी, तो एक एक्स्ट्रा सा डर था। देयर वाज अ फियर इन मी व्हिच वाज ट्राइंग टू प्रूव दैट आई एम अ डायरेक्टर। वो आपके अंदर रहता है कि यार कोई मेरी फिल्म देख के ये बोले ये डायरेक्टर अच्छा है। अब मैं अगर अभी आपको ये बात बोलूंगा तो शायद पर ये आप अपने जहन में रखिएगा ये बात को, कि मैंने वो एक्सपीरियंस किया कि मोर देन टेलिंग अ स्टोरी टू माय ऑडियंस, आई वाज ट्राइंग टू प्रूव माय सेल्फ एज अ डायरेक्टर। तो कहीं ना कहीं मैंने ना वो कम्युनिकेशन लूज कर दी। और वो बात बिल्कुल फिल्म रिलीज होने के बाद मैं 10 जगह इल्जाम दे सकता हूँ कि इसकी पब्लिसिटी अच्छी नहीं हुई, कॉर्पोरेट ने ठीक नहीं किया, प्रोड्यूसर ने पैसा नहीं दिया, फलाना नहीं किया, एक्टर मेरे कंट्रोल में नहीं किया। आप 10 बहाने बना सकते हैं। हकीकत ये है कि मेरी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। देयर इज नो फिल्म, ये मैं बिलीव करता हूँ, अगेन आई कैन बी रॉन्ग ऑन दिस, देयर इज नो फिल्म और देयर इज नो डायरेक्टर, कोई भी फिल्म आप किसी फिल्म के लिए ये नहीं बोल सकते इट वाज अहेड ऑफ टाइम। देयर इज नथिंग कॉल्ड अहेड ऑफ टाइम। यू हैव टू मेक अ फिल्म व्हिच हैव टू रीच द ऑडियंस, द करेक्ट ऑडियंस। यू हैव टू हैव अ करेक्ट कम्युनिकेशन विद देम। सो वो उसको तलाशिए, कोई पॉइंट्स मत ढूंढिए, just focus on it, just understand the people to whom you want to tell a story, you will find them in success. And I'm more inclined in achieving things, and I believe when you achieve something, success follows. Two things, how much pressure you can take when you're making your film. At times you shift your balance towards the economics of the film, and you say ki, if I take the certain actor, the economics will be taken care, I'll work hard on actor and let's see how I do. Another way is, I know my story very well, I know I will be able to tell my story with these actors in a better way. I'll make a commercial film out of this. I'll make a good commercial film out of this. Nobody will lose money. How much they will make, I don't know. So there are two different way of functioning. One is where you select an actor looking at the economics. Another, you select a story and an actor which suits the character. Sandeep sir in the morning that I will love to meet somebody now, like with this institute there, if somebody comes and talks to me, I know that they are aware of the basics. So same way for an actor, even a theatre group, correct your basics properly and brings discipline in your life, conviction in the script, conviction in a character. So which is an advantage. अच्छा, ये हम लोग अभी 2013 में हैं और ये बातें कर रहे हैं. Believe me, the so-called corporates in Hollywood or this thing कि मैं दिल से फिल्म बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा, ये सवाल तब भी होते हैं. 50s में 60s में भी ये सवाल वैसे ही थे. और ये फाइट बिलीव करो, whether are we making a film from our heart or we are, when I say I try my best to tell a story जो मेरे बहुत close आ गया है. और but there is a certain kind of balance जो कि बहुत subconsciously आपके अंदर चल रहा होता है. You know, I like we had a good chat in the morning and I said I personally believe that it's
it's not a platform for me to tell my perspective, just my perspective. I have to understand one thing, that so many people will get involved. They will make my vision come true. And how can I? And somebody will spend those 150, 200, 250 bucks to come to theater and watch the film. I can't be selfish while telling a story. At the same time, there are different kind of directors saying their story in a different way. मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे वो बैलेंस क्रिएट करना है जहाँ मैं अपने दिल की कहानी उस तरीके से सुना सकूँ. But हाँ, you feel like a mini god doing something, जो कि थोड़े टाइम के लिए ही होता है, but you feel very nice about it. Well, to add on to it, I can just only say that once you're making a feature film, remember that you are presenting emotions to the audience. And actually speaking, one thing which I've never liked is like talking about my own work as such, because I don't know, I'm not a trained writer as such, and so I don't know how to explain about what I do, how I do it, why I do. So yeah, I'm here. Never. There is a process. If we start calling a process a problem, then it's a problem. So it's a process. Everybody goes through. You work on a story. You conceive. You imagine certain actors in it. You approach them. You feel that they are right. They feel that they are not. Another struggle. Getting a right actor. Getting a right producer. Making a film. Then releasing it. So it's a process. Whether you make Tanvir Manu or Ranjana or before that Strangers, it's a process where there are these hiccups, there are certain rejections which come, you face, and you learn from it. You learn from it. Strangers was much tougher than Tanvir Manu. Tanvir Manu, Ranjana was much tougher than Tanvir Manu. So it's a process. With every film, you learn a lot. There are certain hiccups which you face and you go ahead.